Hello everyone. Today we will start physics of class 10th with chapter electricity. We will study each and every topic detailed which are given in your NCERT data. Okay, the first topic we are going to deal today is current. So what is current? Current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in a unit time. मतलब अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग वायर है तो उस कंडक्टिंग वायर में से इन यूनिट टाइम मीन्स एक सेकेंड में 1 सेकेंड में कितने चार्जेस फ्लो करेंगे, दैट इज कॉल्ड करंट. इन शॉर्ट यू कैन से द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज करंट. Current is expressed by I. Charge is given by capital Q or small q. You can also use small q to express charge. And time we know is given by small t. So what will be the formula for current? The formula for current will be I is equals to Q by T. That means charge per unit time. And now what will be the SI unit? SI unit can be, we can get from the formula itself. How? You see, the SI unit for charge is Coulomb. Coulomb was the scientist who discovered charge, right? And the SI unit for time is seconds. And then coulombs per second is an SI unit? No. The coulombs per second is known as ampere. Ampere was the scientist who discovered current. Okay? And it is denoted by capital A. So the SI unit of current is amperes. Now define ampere. तो कैसे define करेंगे ampere को? चलो ampere कैसे लिखते हैं हम लोग? coulombs per second. तो इनके आगे 1, 1, 1 लगा दो. So 1 ampere is defined when 1 coulomb of charge flows per second. ठीक है, यहाँ देखो 1 ampere is the flow of 1 coulomb of charge per second. ठीक है? Okay. Now you know what is current, what is ampere, and what is the SI unit. Now, how you will detect, how you will measure actually? Which device is used to measure the current? It is ammeter. So what is ammeter? Ammeter is the device that measures the current. Another, you must have heard galvanometer. So what does galvanometer do? It detects the presence of current. मतलब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो डिटेक्ट करता है कि वहाँ करंट है कि नहीं है. जबकि एमीटर क्या करता है? इट मेजर्स द करंट. ठीक है, क्लियर? तो हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर देखो. 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे डिफाइन करंट. ठीक है. सेकेंड, द फॉर्मूला ऑफ करंट. थर्ड, गिव द SI यूनिट ऑफ करंट. डिफाइन एम्पियर. Then name the device that measures the current, or name the device that detects the current in a circuit. Okay. Now, other than this, you should see ampere is the SI unit for larger amount of currents, and for smaller currents, small amount of currents, we have the smaller units like milliampere. So 1 MA, that MA, small MA is what? Milliampere. So 1 milliampere is equals to 10 to the power minus 3 amperes. And another one is 1 micro-ampere, and that is equals to 10 to the power minus 6 amperes. So these two will help you during the numericals. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है कि जो एम्पियर है ना, ये सॉरी एमीटर जो है ना, दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. सो whenever you are connecting ammeter in a circuit, it should always be in series. Series or parallel connection, we will do it in detail later on. Just remember that ammeter is always connected in series. For example, you see if we have a simple circuit, like this is bulb,
इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी, और यहाँ पे एक आएगी आपकी की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे करंट को मेजर करना है कि इस सर्किट में से कितना करंट जा रहा है, तो आई विल कनेक्ट इट विद द एमीटर, ठीक है। तो देखो एमीटर किस में कनेक्ट हुआ है, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। फाइन, सो एवरीथिंग क्लियर अबाउट करंट? ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वेंशनल करंट. What is conventional current? Before that, let's try to understand about it. कि समझ लो कि यहाँ पर let's see, ये हमारे पास एक है सर्किट, ठीक है, connected to a battery. Fine. Okay. Now this is the positive terminal, this is the negative terminal of the battery, and this is our bulb. Now whenever we have to show the direction of current, how do we show it? We show it from current flowing from positive to negative. Now why from positive to negative? This is because, let's see first what is the definition of current. We say that current is the rate of flow of charges, है ना। अब ये चार्जेस कौन से चार्जेस, अभी तो हमें पता है कि नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, करेक्ट। चार्जेस आर टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. बट एट दैट टाइम व्हेन द करंट वाज डिस्कवर्ड, उस समय हमें सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस के बारे में पता था. उस समय नेगेटिव चार्ज वाज नॉट डिस्कवर्ड, द इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम. दैट्स व्हाई द डायरेक्शन ऑफ द करंट वाज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. बात समझ में आई? उस समय की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, जब करंट डिस्कवर हुआ था, ठीक है. लेटर ऑन क्या हुआ, लेटर ऑन वी कम टू नो दैट कि ये जो करंट है, दिस इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये जो चार्जेस हैं, ये कौन से चार्जेस हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, करेक्ट. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो करंट की एक्चुअल डायरेक्शन है, जो वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और वो कहाँ से कहाँ है, वो है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो एक्चुअल करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. लेकिन क्योंकि तब तक हमने बहुत सारी रिसर्च कर चुके थे, बहुत सारी थियोरेटिकल बुक्स छप चुकी थी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पे पैसा लग चुका था, तो साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि let the direction of the current be shown in the circuits be always be positive to negative. तो आप जब भी सर्किट में करंट फ्लो को शो करोगे, इट शुड ऑलवेज बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये बात याद रखना, ठीक है. मतलब कि व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. आप ऐसा शो करोगे हर सर्किट में. बट इफ दे विल आस्क यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिखानी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो कन्वेंशनल करंट क्या हुआ, वो करंट जो हम पुराने बिलीफ पे चल रही है, वो करंट जो पुराने बिलीफ, कौन सा बिलीफ था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वो करंट जो फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन की ओर हो रहा है ना. देखो यहाँ आप सर्किट में पॉजिटिव टू नेगेटिव शो कर रहे हो, ये वाला करंट, ये जो अंदर करंट आप शो कर रहे हो, दिस इज कन्वेंशनल करंट. और ये कन्वेंशनल करंट किसके ऑपोजिट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट में है. तो दैट इज ओनली इज conventional current. So conventionally and in an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electrons. Clear? Okay. Now this is whatever I have explained is given here. Electrons were not known at the time of when the phenomena of current was observed. So electric current was considered to be the flow of positive charge. जब current discover हुआ तब हमें सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस के बारे में पता था, इसीलिए हमने फ्लो ऑफ चार्जेस वाज टेकन एज फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है. तो अब इस पे ये होता है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितनी भी हमने पढ़ा है, तो वो गलत नहीं हो जाएगा क्या, है ना. पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव टोटली ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो वो कोई गलत नहीं होगा. सारे स्टडीज एकदम करेक्ट थे, क्योंकि जो आपकी करंट है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी.
स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी मीन्स द ये चीज जो है, करंट जो है, दैट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। अब इस सर्किट को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, ये वाले सर्किट को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है, तो भी तो डायरेक्शन चेंज हो गई करंट की, तो इधर से उधर चलेगा, लेकिन है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही, है ना। तो डायरेक्शन चेंज करने से उस क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फाइन, ओके। Now here is an example given in your NCERT, that is 11.1. What does it says? A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge. So let's write what all is given first. 0.5 amperes. Amperes means current is given, correct? So 0.5 amperes. 10 minutes, that means time is given as 10 minutes and you have to convert it into seconds. So it will become 600 seconds. And what is asked? Electric charge. So Q. How many? Find the amount of electric charges. So you have the formula of current. I is equals to Q upon T. You have to find Q. So I into T. I is how much? 0.5. Into T. T is how much? 600. So the answer will be 300. And what is this? This is charge. Charge ka SI unit is coulomb. So 300 coulombs. Clear? Fine? Okay. Now let's move to the next questions. Let's see. Okay. Here are the NCERT page 172 index questions. What does an electric circuit mean? Electric circuit is a continuous closed path made of electronic components through which electric current flows. ठीक है, अब ये closed path क्या है? देखो, ये electric circuit एक हम ले लेते हैं। यहाँ पर let's say I have connected a bulb, ठीक है, ये हो गया key। इसके साथ आप कोई भी component, electronic component आप इसमें add कर सकते हो, ठीक है। तो various components are connected and it is a closed path. Closed path किसे कहते हैं? अब देखो, यहाँ पर ये key closed है, then the bulb will glow. Why? Because the current is flowing through a closed path. पूरा complete circuit है। लेकिन अगर ये की ऐसे होती, ऐसे वाली, बीच में डॉट नहीं होता, that means the key is open, मतलब सर्किट ओपन है, कनेक्टेड नहीं है। क्लोज का मतलब है सर्किट कनेक्टेड है, तो दिस इज क्लोज्ड पाथ। अगर यहाँ पे की ओपन है तो इसका मतलब ये सर्किट कनेक्टेड नहीं है, तो इट इज ए क्लोज्ड पाथ नहीं है, तो क्लोज्ड पाथ में ही सर्किट करंट फ्लो होता है। ओके, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? वी नो दैट इट्स एम्पियर, ठीक है, और एम्पियर को भी हमने ऊपर डिफाइन किया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखो, Q is equals to NE. Now where Q is charge we know, N is the number of electrons. ठीक है, and what is E? E is the charge on an electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. और क्या पूछा उन्होंने यहाँ पे? नंबर ऑफ चार्जेस, मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, और कूलम का वैल्यू उन्होंने दी है 1 कूलम। तो लेट्स राइट हियर कूलम 1 कूलम इज इक्वल्स टू एन, वी हैव टू फाइंड नंबर charge on an electron, we know that is 1.6 into 10 to the power minus 19. Now n is equals to 1 over 1.6 into 10 to the power minus 19. This will become 0.625 into 10 to the power 19, and this will become 6.25 into 10 to the power 18. Now this is n, number of electrons. So these many electrons are present in 1 coulomb of charge. ठीक है, fine, okay. Now let's move on to the next topic, that is potential and potential difference. Now you see this potential is also known as electrical potential. Now what is electrical potential?
work done by moving a charged particle from infinity to another point is called electrical potential. मतलब कि अगर यहाँ पे आपके पास कोई भी पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, that is in infinity, to bring that infinity से वो चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट यहाँ पर लाने के लिए जितना वर्क डन हुआ है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, वर्क डन to move a particle, charge particle from infinity to a point. उसे कहते हैं what? That is known as electrical potential. Now, electrical potential is also known as voltage. इसलिए electric potential is denoted by small v. ठीक है, it is also known as voltage, so it is denoted by small v. Now, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा स्मॉल v का, वोल्टेज का? वी नो दैट इट इज वर्क डन. ठीक है, वर्क डन हुआ है, फोर्स लगा है एक जगह से दूसरी जगह तक लाने के लिए. किसको लाने के लिए? एक चार्ज पार्टिकल को लाने के लिए. दैट इज वर्क डन ओवर चार्ज, दैट इज Q. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. नाउ इसका SI यूनिट क्या होगा? वर्क डन का SI यूनिट इज जूल्स. कूलम इज फॉर चार्ज, सो जूल पर चार्ज is known as volt, and volt is the SI unit of electrical potential and it is denoted by capital V. Now define 1 volt. कैसे define करोगे 1 volt को? तो you know that just put 1 everywhere and then 1 volt of potential difference is defined as when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point. This is what? 1 volt. 1 volt is the potential difference between 2 points when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point. ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज, what device? Name the device used to measure electrical potential, and that is what? Voltmeter. And voltmeter is always connected in parallel connection in the circuit. जैसे कि देखो एक सिंपल सर्किट फिर से वही लेते हैं, बल्ब की कनेक्टेड विद द बैटरी. ठीक है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो यहाँ पर अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है अक्रॉस द बल्ब, तो वहाँ पर हम इस तरह कनेक्ट कर देंगे वोल्ट मीटर को पैरेलल, उस कंपोनेंट के पैरेलल में. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? तो ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या था? इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लेके आना चार्ज पार्टिकल को. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इस A से B तक लेके आने को जितना वर्क डन हुआ है उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. सिंपल. ठीक है, अगर मान लो B पर है 50 वोल्ट और A पर है 100 वोल्ट, तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस? दैट विल बी 50 वोल्ट. तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का सेम फॉर्मूला होगा और सेम SI यूनिट होगी. क्लियर? तो हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा? लेट्स सी व्हाट ऑल वी हैव डन. 2 मार्क्स के क्वेश्चन या 1 मार्क का क्वेश्चन. फर्स्ट इज डिफाइन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. ठीक है, राइट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दोनों का. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? देन डिफाइन 1 वोल्ट. देन नेम द डिवाइस दैट मेजर्स द electrical potential या फिर voltage, and how is it connected in a circuit. Fine, am I clear? Shall we move on to the next topic? Fine. Okay, here it's example now, numerical 11.2 from your NCERT. How much work is done? How much work is done means W you have to find out. In moving a charge of 2 coulomb, charge 2 coulombs is given. Okay,
2 points having a potential difference of 12 volts. So V, electrical potential is given as 12 volt. Now work done Q and V. We have a formula of voltage is equals to work done by charge. Now work done, you remember work done is nothing but energy. ठीक है ना, कितना फोर्स लगा, तो वर्क डन बोलो या एनर्जी बोलो इज वन एंड द सेम थिंग. नाउ यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा V क्रॉस Q and V is how much given? 12. Q is how much given? 2. So 24 what? Work done. So what is the SI unit of work done? Joules. So 24 joules is the amount of work. Fine? Okay. Now here are the in-text questions on page number 172 of your NCERT. Name a device that helps to maintain a potential difference across a conductor. कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेंटेन रखता है? सिंपल क्वेश्चन, बैटरी. जो आप बैटरी कनेक्ट करते हो सर्किट में, दैट ओनली वर्क्स, है ना, वही तो वर्क करती है. क्या करने के लिए? ये एक जगह से दूसरी जगह तक पुश कर रही है इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस को. कौन? बैटरी. ठीक है. What is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt? मतलब simply you have to define what is 1 volt. तो क्या है 1 volt? Joules per coulomb. तो 1 volt 1. The 1 volt of potential difference in a circuit is defined as when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point, that is known as 1 volt. ठीक है? Okay. Now how much energy is given to each coulomb of charge passing through 6 volt battery? How much energy? Energy means what? Work done. Each coulomb, that means charge is given, each means 1 coulomb. Passing through a 6 volt battery means voltage is given. How much? 6 volt. Again we have a formula. Voltage is equals to, electrical potential is equals to work done by charge. We have to find work done. So V cross charge is, how much voltage is given? 6 volt. Charge is given as 1. So it is 6. 6 what? Work done. So it is joules. So 6 joules of energy is given to each coulomb of charge passing through 6 volt battery. ठीक है? Clear है? Let's move to the next topic, that is circuit diagrams. See, whenever you are going to draw a circuit, there are certain symbols that you have to know. और वो symbols क्या है? That is, the first one is the electric cell. तो ये cell है. इसके 2 terminals. The bigger line is the positive terminal and the smaller line is the negative terminal. जब बहुत सारे cell ऐसे एक साथ combine हो जाते हैं, that will form a battery. Now here is a plug key. ये open key है, means ये एक key open है. And closed key means इसमें it will be like this. This is this shows that the wires are joined. And this shows the wires are crossing each other. Clear? Okay. Now this is the electric bulb. This is the sign for resistor. We are going to study in the next class in detail about resistor and resistance. This is variable resistance, means where you can change the resistance. And variable resistance, or we also call it as rheostat. This is ammeter. Ammeter means what? Ammeter is the device that measures the current, and it is always connected in series connection. And the voltmeter is the device that measures the potential difference across the circuit, and it is always connected in parallel connection in a circuit. Clear? Fine. Now the next topic is Ohm's law, one very important topic, and 2 marks definitely asked to define or give the statement for Ohm's law. So what does the Ohm's law says? The voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it. Means जो voltage है across the conductor,
This is directly proportional to the current I. ठीक है? And then to remove this proportionality sign, we write V is equals to IR. And what is this R? R is known as resistance. And it is denoted by R. And its SI unit is ohm. This is how it is denoted. Okay? So this is what? This is nothing but Ohm's law की condition. और ये directly proportional. जैसे V is directly proportional to I means as the current, you can also say I is proportional to V. As the current increases, voltage increases. As the voltage increases, current also increases. But there is a condition that provided all physical conditions during your experiment. And the temperature should remain constant. This is the condition. Clear? Fine? अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत important question आता है कि draw the graph for Ohm's law. ठीक है, यहाँ पे हम Ohm's law का graph draw करते हैं. This is your x-axis, this is your y-axis, and the x-axis will show you the current and y-axis will show you the voltage. So how will be the graph? The graph will be a straight line. क्यों? क्योंकि देखो proportional है दोनों. I बढ़ रहा है तो V बढ़ेगा, I कम होगा तो V कम होगा, तो ये proportional है. तो इसलिए एक straight line होगी किसकी? Ohm's law के ग्राफ. और अच्छा, इसका अगर स्लोप बनाएंगे तो इस ग्राफ का what it will give you? स्लोप कैसे होगी? स्लोप is given by y upon x axis. तो y axis पे क्या है आपका? V, that is electrical potential difference, and x axis पे क्या है? करंट. तो V upon I, इसके अकॉर्डिंगली बताओ V upon I क्या होता है? यहाँ पे आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, V is equals to IR. तो यहाँ से V upon I is nothing but R, that is resistance. So slope is giving you what? Slope will give you the value of R, that is resistance. ठीक है? तो यहाँ पे एक और 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि डिवाइसेस डेट फॉलोस. देखो, अब सारे डिवाइसेस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. हार्डली 1 or 2 डिवाइसेस हैं डेट फॉलोस द ओम्स लॉ. The devices that follows the Ohm's law, that follows the Ohm's law. ठीक है, उन डिवाइसेस को क्या कहते हैं? उन डिवाइसेस कहते हैं ओमिक डिवाइसेस. ओमिक डिवाइसेस. और वो डिवाइसेस जो नहीं फॉलो करते, डज नॉट फॉलोस द ओम्स लॉ, उसको कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस. तो ओमिक डिवाइसेस की जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो उनका ग्राफ ऐसे कुछ भी ऐसे कर्व बन जाएगा या कुछ और बन जाएगा. ठीक, क्लियर? फाइन. So next part of the chapter, mostly about the resistance in detail, we will study in the next class. Thank you and bye.